महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। नाना गुरु महाराज ये जा प्रसाद की झड़ियां बख्शने का, अपनी संगत बनाने का आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, आज हम सबके बीच में गुरु महाराज जी की प्यारी बेटी पिया आंटी जुड़ी हैं। पिया जी, वी वेलकम यू। कितनी आंटी आपकी आईडी को को होस्ट बनाया है? इज इट द सेम आईडी यू वांटेड टू बी और किसी और आईडी से ज्वाइन आंटी? जय गुरु जी। जय दीप्ति गुरुजी। आंटी। जय हाँ। गुरु जी बेटा, जय गुरु जी। टिया, ओके, टिया आईडी। हाँ कैन जी। आई प्लीज रिक्वेस्ट फॉर होस्ट टू मेक टिया आंटी को होस्ट एज वेल? जय गुरु जी। टिया आंटी, आप अपना प्लीज अनम्यूट करिए, गुरु महाराज जी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। पहले तो मैं कहूँगी कि शुक्राना टू गुरु जी that he has given me this wonderful opportunity and a chance to come online and share my beautiful journey and my connection with him. And I would also like to say शुक्राना to all sevadars who take their time and their effort into doing this. आई होप कि गुरुजी हमारी लाइफ में हमेशा रहे और हमारा हाथ कभी ना छोड़े। I would also like to say sorry in advance कि गुरुजी I'm sorry अगर मुझे कोई mistake हो जाए during the satsang या कुछ मैं गलत बोल लूँ। But yeah, so just now a shabad, a beautiful shabad played. So Satguru प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू लई छड़ाई. It is one of my favorite shabad and it makes me emotional every time I listen to it. The meaning behind that is my beloved Guru is always there for me, and wherever I may be, he will come and save me. It's such a divine shabad and it's a great reminder कि जब भी कुछ होता है हमारी जिंदगी में we need to know कि गुरु जी महाराज हमारे हर पल हमारे साथ होते हैं, even during the bad times and obviously the good times. And everything जो हमारी जिंदगी में होता है it happens for a reason. And if even if one door closes, there will be two doors that will open. So, Shukrana Guruji, for giving me this chance. And I would like to start by sharing my journey and where it all started. So, the first satsang is about my ring. मेरे पापा ने मुझे एक डायमंड रिंग गिफ्ट करी थी और before he left for India, um, it was the only thing I had of his, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी. So when he left for India, we had some problems. Mama and him were divorced. So we never, after he left for India, we kind of fell off. We had no contact information. Like बात ही नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था. But I'm a daughter, so I always um wished कि maybe one day की बात होएगी. Um, though I was very attached to the ring that he gifted me. And Sangat ji, ek din kya hota hai, after like 5 years, I'm in the bathroom and I realize कि मेरी ring कहीं खो गई है. I don't have it and I'm so attached to that ring. I have kept it. I've had it for 10 years and I have never lost it. Though I get very scared, I get very emotional and I call mummy और मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मी मुझे लग रहा है मेरी रिंग खो गई है. तो मम्मा उस टाइम बोलती है कि अब खो गई तो खो गई, अब तू क्या करेगी, सो आई वॉज वेरी सैड. तो क्या होता है संगत जी, आफ्टर आई लॉस्ट माई रिंग हमें इधर एक हफ्ता या 2 हफ्ते बाद हमें पता लगता है कि माई डैड हैज़ passed away. So that was obviously a very heartbreaking news. It shattered my heart to, कि मेरे पापा is no longer here. After that, मुझे रिंग अभी भी नहीं मिलती. तो मैं गुरुजी को बस प्रे कर रही होती हूँ कि गुरुजी,
प्लीज मेरी पापा की एक ही आखिरी लाइक गिफ्ट था, इट्स लाइक हिज निशानी काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे प्लीज लाइक वो ढूंढवा दो, रिंग। एंड मैं हमेशा, आई रिमेम्बर एवरी टाइम आई वुड गो टू स्लीप आई वुड जस्ट से, गुरुजी प्लीज मुझे बस रिंग दिलवा लाइक वापस करा दो। तो फिर एक दिन क्या होता है, हमारी फैमिली की ग्रुप चैट होती है, और नानी उस ग्रुप चैट पे लिखती है कि पिक्चर भेजती है और मेरी रिंग पहनी होती है और पूछती है कि टिया इज दिस योर रिंग। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ नानी, दिस इज माई रिंग, लाइक यूर एट वर्क, आपको कहाँ मिली, कैसे मिली। तो वो मुझे बता रही होती है कि मेरी नानी हमेशा पोएट्री लिखती है गुरुजी के लिए। तो नानी ने बताया कि नानी ने एक पेपर पे पोएट्री लिखी थी डेडिकेटेड टू गुरुजी, एंड शी हैड मिसप्लेस्ड द पेपर। तो she was looking through her workplace trying to see कि मैंने कहाँ रख दिया पेपर। तो वो उनका एक लंच बैग होता है, वो एक्चुअल लंच बैग नहीं होता, वो बस बैग होता है कि उन्होंने लाइक लंच बैग बना दिया बैग को। तो वो बोल लाइक सोचती है कि मैं वन लास्ट टाइम चेक करती हूँ इसमें, मैं अगर पेपर मिल जाता है, नहीं तो मैं इसको थ्रो अवे कर दूंगी लंच बैग को। So, as soon as Nani looks in the bag, there is my ring. And, it's mind blowing कि Guruji like actually listens to you when, when you need to, when you're thinking something, when you have any thoughts in your mind, Guruji हमेशा हर पल सुन रहे होते हैं सबकी बातें। तो नानी ने बताया कि ये मैंने गुरुजी की पोएट्री लिखी थी, वो मिसप्लेस हो गई, और मैंने ढूंढने के लिए अपने लंच बैग में देखा और तेरी रिंग मिल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की मुझे अपनी जो इतनी अटैचमेंट थी, जो पापा की गिफ्ट की चीज़ थी, आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड इट, एंड दैट्स काइंड ऑफ वेयर माई connectivity started. It was like, okay, there is something here. So what happens is, for my dad's death, we did our first satsang dedicated to, कि papa, like it was for papa basically. तो उस टाइम में मैंने सेवा करी थी, there were just a few people, like I think two families थी। तो I took the seva to make parathe, for Guruji and also for Papa. And after that, मेरी मम्मी की फ्रेंड को सपना आता है कि मैं बीच में खड़ी हुई हूँ और गुरु नानक देव जी एक साइड पे है और गुरु जी एक साइड पे है, सो आई एम इन बिटवीन गुरु नानक देव जी एंड गुरु जी। And Sangat ji, that was such a beautiful blessing to me because for some reason I've always been connected to Guru Nanak Dev Ji. I don't know what it is, but there is some type of connection, some type of bond that जब भी मैं Guru Nanak Dev Ji की स्वरूप देखती हूँ, I don't know, I just start crying. I get very emotional. So there is some type of connection that I have with Guru Nanak Dev Ji. So the fact that that blessing was shown through मम्मा's friend, like मम्मी की फ्रेंड को, और वो मानती भी नहीं थी। तो मम्मी की फ्रेंड को ये सपना आता है, मेरे लिए आता है, मुझे ब्लेसिंग दी जाती है, सो थैंक यू गुरुजी। एंड um, just speaking about connectivity, मेरी नानी को शिव जी बहुत पसंद है, शी इज़ अ बिग शिव जी की भगत। और मेरी मम्मा लव साईं बाबा, तो मम्मा को साईं बाबा के दर्शन मिलते हैं गुरु जी में, नानी को शिव जी के दर्शन मिलते हैं। सो इट्स अबाउट योर इंटेंशंस, इट्स अबाउट हु यू बिलीव। एंड अगर आप गुरु जी के दरबार में आओगे, मुझे लगता है जो आप जिसको भी मानते हो, इफ़ यू जस्ट meditate upon them with your true intentions, Guruji himself will show you, his presence through them. So ये होता है, this was again the connection, where my journey just had started. I was still learning so much about Guruji. Then the next satsang that I remember was एक दिन मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी, and I was talking to Guruji, और मैं I was just, पूरा room like dark था, it was night। तो I was about to sleep और मैं ऐसी गुरुजी से बातें कर रही हूँ। I don't remember necessarily मैं क्या बातें कर रही थी, but मैं बातें कर रही थी। और I had a desk in that room, और उसके ऊपर मेरा कंप्यूटर था स्कूल का, और उसके साथ एक कीबोर्ड था जो एलईडी कीबोर्ड होता है। और
Sangatji, that keyboard only turns on when the computer is on. तो मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ and I see the keyboard lighting up and it's changing different colors. It's pink, it's blue, it's yellow, it's orange. So it just felt like wow, like Guruji again. So Satguru Pyara mere naal hai. He's always there. He's always listening no matter what. Though it was such a beautiful, Guruji just showed me his presence कि तू मेरे कोल बातें कर रही है, तो I'm right here with you. It was just a lovely moment, and I was so happy in the morning. मैंने मम्मी को भी बताया कि मम्मा देखो, like मेरे साथ ये हुआ. I was so happy. Um, Sangaji, next I want to emphasize on the power of mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. So during COVID, we all know there was a huge lockdown forever, and my school was like we didn't have school. तो क्या होता है during COVID, Sangat ji, I fell very ill. I had about 7 symptoms of COVID, and even though I didn't diagnose, for COVID, I had to get quarantined, and I was in our bedroom for about 2 weeks. I didn't see, my family. मुझे खाना मिलता था बाहर से, and so I was very depressed क्योंकि I wasn't able to talk to mama and just see her. Though 2 हफ्ते I spent very ill. और एक दिन हम ना हर रोज मंत्र जाप करते थे, हर रोज मंत्र जाप करते थे, और गुरुजी के आगे हम जल रखते थे, और आफ्टर मंत्र जाप वी वुड ड्रिंक द जल. तो क्या होता है, एक दिन मैं सोती हूँ एंड आई ड्रीम कि मेरा I've been passed away. So in my dream, I'm dreaming about my spirit, and my spirit is flying, and I'm trying to find my mom. So my spirit is flying and मैं मम्मी को ढूंढ रही होती हूँ, and then I eventually see my mom, and then मैं सोचती हूँ कि मैं मम्मा को कैसे like बताऊँ कि I'm no longer here. So I'm trying, like, my spirit is trying to think of things. I'm trying to touch her, but I can't touch her. Then I dream कि मैंने मम्मा के ऊपर blow करा है, trying to give her that indication कि, I am no longer here. So I wake up, Sangat ji, and I told my mom this dream, and मम्मा बोलती है कि कोई नहीं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो don't worry, गुरुजी ने कष्ट ले लिया. तो क्या होता है, a few days later, mind you, I'm still in quarantine. एक फ्रेम होता है जो मेरी मम्मी और नानी ने मुझे अपने स्वीट 16th के लिए गिफ्ट करा था. तो एक साइड पे मेरी पिक्चर होती है और एक साइड पे मेरे नानू की पिक्चर होती है. तो it's like a book frame that opens and then you see both the pictures. एंड मम्मा बताती है कि वो फ्रेम को कुछ नहीं हुआ, गिरा भी नहीं, लेकिन जब हम खोलते हैं फ्रेम को, मेरी पिक्चर क्रैक होती है एंड नानू की बिल्कुल सही होती है. सो अगेन दैट वाज गुरुजी's confirmation कि यस कुछ होना था, but I saved you. And there have been many, many various number of times where Guruji has saved all of our lives, and it's actually like amazing. But Guruji is there, and this is only possible because of his mantra jap. His mantra jap is so powerful and it provides so much healing. हमें समझ नहीं आता कि just by doing such a simple mantra, you have like आपकी पूरी life is like set. तो ये होता है. Um, Another sweet thing is, so everyone has their own way of seeing Guruji's darshan, right? किसी को रोटी के ऊपर ओम दिखते हैं, किसी को butterflies दिखती है, किसी को कोई numbers को believe करता है कि अगर उनको ये number दिखे, तो क्या होता है, I don't remember, but I just start seeing hearts everywhere. तो जो मेरे डैड ने मुझे रिंग दी थी, वो हार्ट हार्ट शेप की रिंग है.
और मुझे याद आता है कि ever since I start seeing hearts, I started connecting that with Guruji. कि Guruji, like, whenever I see a heart, that means you're with me. कि that was just like my connection with Guruji. And then मुझे याद आता है कि जब मैं like स्कूल में भी थी, मैं हमेशा जब टीचर हमें असाइनमेंट देती थी, मैं हमेशा अपने नाम नाम लिखती थी, टिया लिखती थी और फिर हार्ट बनाती थी एट द एंड. तो hearts were just like I've always loved the symbol of hearts. मुझे हमेशा like अच्छे लगते हैं hearts. तो I started seeing hearts everywhere. And I'm talking like मुझे मिठाई मिलती थी तो हार्ट आ जाता था. मैं अगर लंगर में बिस्किट खा रही हूँ तो अगर जो उसके टुकड़े होते हैं like crumbs, when they fall they become a heart. मुझे रोटीज में इतने हार्ट आए हुए हैं. मुझे चाय की मलाई में हार्ट बन जाते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट गुरुजी. व्हेनेवर आई गो टू गुरुद्वारा मुझे पकोड़ा आया हुआ है जो पूरी हार्ट शेप का पकोड़ा है. मुझे जब चटनी ग्रीन चटनियाँ मिलती है तो वो भी हार्ट शेप की आई. तो it's amazing कि how Guruji shows, he like has his own way of showing everybody his presence through different things. And some people see it in butterflies, but मुझे हमेशा वो presence गुरुजी की दिखती है in hearts. um Though speaking about hearts, I would like to share a very specific satsang regarding the symbol of hearts. तो एक दिन क्या होता है, मुझे ना कुछ चाहिए होता है स्कूल के लिए. और मैं मम्मा हम कहीं से आ रहे होते हैं. तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी टारगेट विच इज़ अ स्टोर, टारगेट पे लेट्स स्टॉप एंड लेट मी गो अहेड एंड गेट अ नोटबुक. इट वाज समथिंग रिगार्डिंग स्कूल. तो हमें while we're making that turn, and we go in the parking lot, we see that there is a guy and he's holding a sign, so you can tell he's homeless. तो मैं like सोचती हूँ कि I'll go in, I'll get him something to eat or drink. तो क्या होता है संगत जी, मैं जाती हूँ टारगेट अंदर, and I get everything I need, and then I pick him up a few things, a few snacks and a drink. So while we're coming out, I bring the cart to the car, and मैं सारा सामान पटक रही हूँ in the car, and then I see this in the car, and I just showed it to you. Um, तो मैं ये देखती हूँ, कार्ट के अंदर होता है, और मैं बोलती हूँ लाइक मम्मा देखो इट्स अ हार्ट. तो लाइक गुरुजी शोइंग मी हिज प्रेजेंस, लेकिन मैं थोड़ी लाइक आई एम लाइक आई डोंट वांट द पीपल टू थिंक दैट मैंने कुछ स्टील करा है. तो शुड आई गो बैक एंड लाइक जस्ट गिव इट बैक कि ये मेरी कार्ट में था. तो मम्मी बोलती थी कि तू ऐसे क्यों सोच रही है, तू ये क्यों नहीं सोचती कि गुरुजी इज वॉचिंग यू, एंड the fact that कि तेरा thought process इतना like अच्छा है कि you saw a homeless man and you're wanting to get him something to eat. Guruji sees that and he sees your intentions, and that's his way of basically telling you कि I'm here for you, and I'm looking at your good deeds. So I was like, huh, you're right. Like it's a great like I guess to keep and like just remember about the satsang. So I end up keeping this. और मुझे ऐसे ही बहुत सारे like just hearts दिखते रहते हैं, सारी जगह hearts पे hearts दिखते हैं. So thank you Guruji, शुक्राना Guruji for just showing me your presence everywhere. Life में बहुत सारे times आते हैं where life is just rough. It's हमारी बहुत problems होती है, but again it's a really good reminder कि जो भी आता है it happens for a reason. All the bad, like हम सोचते हैं कि वो अभी चीज़ bad हो रही है, but later when we actually look into our life and how our life has evolved, we look back and we say, okay, this was necessary. So, I now would like to share कि there was a time where things were just going really bad. Times were really rough, and मैं हमेशा like बहुत sad रहती थी. I was very like, I wouldn't say depressed, but I was at a very low moment in my life. And I would just always remember my father and him, like his absence, like him just not being here, and it's impacted me a lot as a person. तो एक दिन क्या होता है, I don't know why, but मैं बहुत sad थी, and I was in the bathroom and I was crying, and everyone was sleeping, और मैंने बस गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी like that's it,
I want to see my dad and just like take me away. तो मैंने ये pray करा and I was just bawling my eyes. So that night when I went to sleep, मेरे पापा मेरे ड्रीम में आए and he gave me a big hug and it was so intense कि जब भी मैं सुबह उठी um when I woke up in the morning it was so intense कि I felt his hug, like I felt his hands grab me and it was amazing कि Guruji, like मैं बहुत sad थी उस night and Guruji heard me कि this is what I wanted and Guruji gave it to me. Guruji showed me the presence of my dad in my dream. My dad came and he hugged me and he basically, you know, कि हमारे जो passed on होते हैं, they're watching too. They're always there for us and I guess it was a way of Guruji showing me like your dad is always there for you. Even if he's not physically there, he's always there for you as your guardian angel. So that was a satsang that, you know, really was like amazing ki wow Guruji sab kuch sunte hai. So, like he's always there. Um then what happened, Sangat I had two cats, Neo or Leo. तो Neo was my first cat जो मेरी नानी और पापा ने गिफ्ट करा था मुझे. I was in the seventh grade. So February 8th, 2024 is when my cat passed away. Or I recall the night before his passing, मैं गुरुजी को clearly बोलती हूँ कि गुरुजी you know क्योंकि he had been sick for about 2 months. वो बहुत बीमार चल रहा था. He just seemed very like low on energy. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी if you know if अगर ये तकलीफ में होएगा then it's okay, you can take him. But अगर ये ठीक हो जाता है then please इसको जल्दी से ठीक कर दो and just get rid of his um you know illness. तो हमें खुद ही नहीं पता था कि क्या हो रहा है उसको. So February 8th I wake up in the morning and मुझे पता नहीं वो gut feeling आती है कि okay, I think this is his time. And so I you know call off work and मैं नानी को फोन करती हूँ कि नानी we need to take him to the emergency. I don't, this is not good, he's having breathing issues. तो क्या होता है संगत जी, मैं नियो को लाती हूँ और गुरुजी के चरण पे रख देती हूँ और वो he's trying to breathe, he can't breathe. तो नानी आती है and I pick him up and I take him in the car. We are on the way to the vet and he dies in my arms. So it really sucks losing your, like, you know, that was like my baby. I loved him more than anything and वो हमारी family बन जाते हैं, pets. So that was such a very like again low moment in my life because you know my baby was gone. So I was really sad or मैं you know every day रोती थी. I don't remember a single day I went without crying and मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि मैं रो रही हूँ लेकिन मैं गुरुजी को बोलती थी कि it's okay गुरुजी, मैं sad हूँ but thank you कि आपने मेरी बात सुनी. You knew कि अगर Neo, you know, Neo, if Neo didn't pass away, then he would have been in more taklif. And, you know, I at that point I wasn't selfish. I let Guruji do his thing and take him away. And where he was less, you know, he was not as sick as he was probably going to be अगर वो survive करता वो time. So that happened, Sangat ji, and after a few weeks, I remember मैं हमेशा शब्द सुनती हूँ अपने phone पे. Whenever I'm getting ready, I always have शब्द playing in the background. तो एक दिन क्या होता है, मैं बहुत रो रही होती हूँ, मुझे नियो की याद आ जाती है and the शब्द शब्द is playing on my phone. तो मैं नीचे आती हूँ, फोन रखती हूँ नीचे और मैं गुरुजी को बस मत्था टेकती हूँ कि गुरुजी लाइक आई मिस हिम सो मच. और तब शब्द आता है, सतगुरु होए दयाल. एंड संगत जी, हम सब जानते हैं कि कभी कभार हम सब कुछ शब्द नहीं समझ आते, स्पेशली मी. आई गो आउट ऑफ माई वे टू सर्च अप अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या होता है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस्ट आई कैन. लेकिन उस टाइम स्पेशली मुझे शब्द इतने I couldn't understand what they really meant. मैं बस सुनती थी because
again it was peaceful. तो उस दिन क्या होता है, जैसे ही मैंने मत्था टेका, मुझे लाइन, I exactly knew कि what it meant. I didn't have to go out of my way to search it because it was Guruji, right? Guruji gives you answers through Shabad. Guruji was telling me, so Satguru hoy dayal, ta jam ka dar ke ha, Satguru hoy dayal, sad hi sukh deha. And the English translation, it translates to, when the true Guru is merciful, then why should we fear death? When the true Guru is merciful, the body is always at peace. तो गुरुजी ने मुझे उसका जवाब वहीं पे ही दे दिया जब मैंने मत्था टेका गुरुजी से, when I was crying कि I miss him. तो गुरुजी was telling me कि he's here, he's right here with me, you don't worry. Yes, you miss him, but he's always going to be there with you, and I have him here with me. So don't worry. तो वो मेरी not a doubt, but जो मेरी, I was so sad. लेकिन that, hearing that shabad, that was like my Guruji gave me an answer. तो it was very reassuring. तो संगत जी ऐसे ही करते हैं गुरुजी, whenever we have any doubts, any questions in our minds, you sit, listen to Shabad, and आपको तभी like वहाँ पे ही आपको answer मिल जाता है, and then you're like, oh my gosh, Guruji is so great because again he listens to every single thing, and आपको कभी like बोलना भी नहीं पड़ता. Sometimes we have so many things going on in life कि sometimes we don't have words to say, but he's our divine light. He knows everything. Even our हमारे जो आंसू होते हैं, they have such big meanings, and he understands. We have to do is matha take and we cry, and he knows exactly what we want in life. और वो हमें देते हैं, but सब time पे देते हैं. तो संगत जी ये होता है जब मेरी कैट पास अवे होती है few weeks later. This is how he reassures me कि he's fine, Neo is fine, he's with me. तो उसके एक साल बाद, so now it is February 7th 2025, गुरुजी हमें, मेरी और मेरी फैमिली को ब्लेस करते हैं और हमें मिसिसिपी बुलाते हैं for a satsang. तो हम वहाँ पे हम गुरुजी की कृपा से दरबार भी सेट करते हैं. और गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी प्लेलिस्ट की. तो हमेशा क्या होता है, अगर मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ तो मैं अपने लैपटॉप के पास बैठती हूँ. दैट वे इफ द वॉल्यूम फ्लक्चुएट्स आई कैन एडजस्ट इट. तो मैंने इस सत्संग पे सोचा था कि मम्मा मैं लैपटॉप के पास नहीं बैठूंगी, आई वांट टू सिट समवेयर एल्स. तो क्या होता है, आई सत्संग शुरू हो जाता है, मैं बैठ भी जाती हूँ कहीं और पे, मैं लाइक लैपटॉप इज फार अवे फ्रॉम मी. तो जहाँ मैं बैठी होती हूँ, जब नेक्स्ट शब्द चलता है, आई थिंक द वॉल्यूम वाज ईदर टू लाउड और टू लो. तो आई वाज लाइक ओके, आई थिंक आई शुड गो सिट नियर माई लैपटॉप. तो आई मूव इन द सत्संग एंड आई सिट नियर माई लैपटॉप. तो मैंने, वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने, whenever I actually try to close my eyes and meditate, क्या होता है, I go to satsangs, but sometimes I'm like my eyes are open, I'm just looking at Guruji, and I don't quite close my eyes and just meditate upon him. So that was the first time where I actually took the time to close my eyes and just like think about Guruji, not think about anything in life, just close my eyes, blanked out, and just thought about Guruji. और इतने में क्या होता है, towards the end of the satsang, I think it was, I opened my eyes, और मुझे मेरी आंखें सिर्फ टेबल पे जाती है, साइड टेबल, ग्रीन चोला होता है, और मुझे मेरी बिल्ली की पूरी आउटलाइन दिखती है. उसके कान दिखते हैं, उसकी आंखें दिखती है, उसकी नाक दिखती है, उसका माउथ दिखता है. आई सी हिज बॉडी लाइक जस्ट पोजिंग. एंड मैंने वो, आई took a picture of that, और मैंने कलाज भी बनाया कि to compare it, like how similar it looks. And then I realized कि जो जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, right in front of me is a bouquet of flowers, और उसमें जो the type of flower it is, it's a blue flower. I forgot the name, Sangat ji, I'm so sorry. But वो flower same होता है जब नियो की अस्थियां हमें मिली थी, whenever we got his ashes. मैंने I scattered them in a river. तो मम्मी उस दिन बोलती है कि
तू ना नियो के लिए एक फ्लावर लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर ले ले। तो जब मैं डॉलर जनरल जाती हूँ और जो मैंने फ्लावर पिकअप करा था उस टाइम जब नियो की अस्थियां मिली थी, वो सेम फ्लावर द नेक्स्ट ईयर आई एम सिटिंग इन फ्रंट इन मिसिसिपी सत्संग। सो दैट सेम फ्लावर सेम कलर। तो मुझे वो भी कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि नियो की पहले मैंने आउटलाइन देखी और द फ्लावर इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी संगत जी। एंड द फैक्ट कि आई यूज्ड माई ब्रेन और मैंने कहीं और बैठना, I wanted to sit somewhere else, but Guruji also made me sit in front of that flower. So it's all his planning. तो फिर सत्संग एंड भी हो गया। आई डिडंट इवन रियलाइज द डेट। एंड देन जब मैंने अपना फ़ोन देखा मुझे दिखता है कि आज तो February 7th है एंड कल नियो का 1 साल हो जाएगा। तो मैं मम्मा को बताती हूँ कि वाओ लुक, गुरुजी नोज एंड गुरुजी showed me his presence and गुरुजी knew कि I was going to be very emotional. I was very emotional कि 1 साल हो गया, it's crazy कि how time flies by. तो गुरुजी showed me his presence जब 1 साल हिट हुआ। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना for just being there, for always just knowing what my heart wants. um तो फिर um yeah, so again like I said कि हम सबकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, जर्नी डिफरेंट होती है। कोई बटरफ्लाइज को देखता है, कोई नंबर्स को देखता है। सो दिस सत्संग इज अबाउट नंबर्स एंड आई डोंट रियली गो टू इन डेप्थ, लेकिन ये शुरू हुआ जब मेरी मम्मा और मेरी नानी अपना कुछ whenever they're driving, नानी बोलती है ओ जय गुरु जी मुझे ये दिख गया, मुझे ये दिख गया। और मम्मी बोलती है कि मम्मी का नंबर है सेट हुआ है 747। अगर मम्मा को 747 दिखता है मतलब गुरुजी इज देयर विद हर। Obviously Guruji is always there, but it's like us as human beings, we question things. So sometimes when we're having a bad day, if we see that number, it's like, oh my gosh, ki Guruji actually is showing me his presence, or it's just like a reassurance. So मम्मा को जब 747 दिखता है, दैट्स कि गुरुजी इज देयर, गुरुजी इज वाचिंग। तो मैं कार में ही ऐसे सोच रही होती हूँ कि नानी का नंबर ये है, मम्मी का नंबर ये है, गुरुजी मेरा नंबर क्या है, लाइक यू टेल मी। तो फिर माई बर्थडे इज ऑन August 11th, तो 1 + 1 = 2। तो मैं सोच, और गुरुजी का नंबर 7 है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना नंबर रखती हूँ 727। And I was so straightforward with Guruji. I tell him, Guruji, 727 is my number, and whenever like agar kuch bhi ho raha hai and I want to see it, please you show me this number, and this will be like a sign from you to me कि आप हो मेरे साथ, and just a reassurance. तो तो क्या होता है, ever since that day संगत जी, I don't know, I Guruji loves his children so much कि ever since that day मैंने एक बात बोली, उस दिन से मुझे 727 हर जगह दिखता है, नंबर प्लेट पे दिखता है, टाइम पे दिखता है। um, एक दिन मैंने इंस्टाग्राम लाइव ज्वाइन किया था गुरुजी का ही, और मुझे उसमें जो यूज़र नेम, कोई यूज़र ज्वाइन करता है उनका यूज़र नेम होता है और 727 होता है। सो इट्स जस्ट लाइक अ वेरी रीअश्योरिंग थिंग कि गुरुजी इज लाइक ऑलवेज देयर। तो फिर बिकॉज वी आर ह्यूमंस, आई एम अ टेरेबल पर्सन, लेकिन मैंने गुरुजी को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करी। मेरे फ़ोन पे आई हैव ए 12, आई यूज टू हैव अ 12 hour क्लॉक। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मे बी 727 मुझे दिखता है बिकॉज इट्स अ हैबिट ऑफ मी ऑलवेज क्लिकिंग माई फोन एट दैट टाइम ऑफ द डे जब भी 727 हो। तो आई ट्राई टू आउटस्मार्ट गुरुजी एंड आई चेंज माई क्लॉक टू द 24 hour क्लॉक। तो आई एम सो सॉरी गुरुजी कि मैंने आई ट्राई टू आउटस्मार्ट यू, but instead of 727, I would see 1727, which is, एंड तो 727 होता है बट वो टाइम 527 होता है एक्चुअली में। तो इवन व्हेन आई चेंज द टाइम टू द 24 hour क्लॉक, मुझे गुरुजी ने हमेशा ही 727 दिखाया। एंड this is just one example of Guruji just always like showing me his presence.
Um, Another life-giving satsang I would like to share is during the time of 2023, October 2023. Sangat ji, hum Halloween nahi banate. I have never been a fan of Halloween. Mujhe, like, I don't like horror movies. I don't like anything like Dharamna. So I मुझे अक्टूबर 2023 में एक ड्रीम आता है एंड वो ड्रीम में मुझे अपना बैकयार्ड दिखता है एंड in the backyard there's a ton of Halloween decorations और मुझे चार tombstones दिखते हैं. So each tombstone has my name on it, my brother's name, my nanny's name, and my mom's name. तो हम चारों के नाम लिखे होते हैं और मेरी मेरी टूमस्टोन में एंड मम्मा की टूमस्टोन में मुझे डेट दिखती है. मम्मा का डेट लिखा होता है कि अक्टूबर लाइक द एंड ऑफ अक्टूबर सो October 31st एंड वही डेट होती है और मेरी डेट लिखी होती है October 17 के करीब. आई एम सॉरी गुरुजी अगर आई एम मिस्टेकन बट इट्स अराउंड दैट टाइम. और मेरी नानी और मेरे भाई की कोई डेट नहीं लिखी होती बट देयर tombstones आर देयर. तो आई रिमेंबर waking up and I was super scared. I ran to mama, I woke her up and I was crying because it was just a very scary dream. तो after that मम्मी said कि don't worry हम मंत्र जाप करेंगे एंड उस दिन मैं स्कूल जाती थी तो मम्मी ने बोला कि उस जो तूने डेट देखी है 17 अक्टूबर just that whole week just be aware of your surroundings be a bit more careful basically. तो um, मेरी डेट आती है and around it was in October 17th but I think it was the week जो मम्मा ने बोला था कि just be careful. तो I recall कि I was at school. I was in college and I had just gotten done with my lecture. And क्या होता है कि usually after lectures I would go to the library, but in order to go to the library you would have to cross a road. तो संगत जी मैं साइडवॉक पे हूँ और मैं ट्रैफिक लाइट को देखती हूँ कि इट्स ग्रीन cars are going by but I don't know what I'm doing. I'm still going. I'm trying to go और इतने टाइम में क्या होता है मेरी फ्रेंड नहीं होती. I actually don't even know her. वो मेरी क्लास में थी लड़की but I don't know her. कभी उससे बात नहीं हुई. While I just take 2 steps forward she grabs onto my shoulder and she pulls me back and she's like, "What are you crazy? What are you doing?" तो मैं उस टाइम पे I just chuckle like like I don't know what I like मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या किया और like क्या हुआ. तो I didn't think about it. I जब रेड होती है लाइट I go to the library I sit and I try to just process everything कि just what happened. I was in a bit of shock कि why did I do that. तो I'm sitting down and I'm just trying to recall everything that happened. And then I began crying and I start thanking Guruji कि Guruji, thank you आपने मेरी जिंदगी like बचाई. And then I give a call to my mom और मैं मम्मा को बोलती हूँ कि I'm only gonna tell you this if you don't get mad and I tell her exactly what happened. तो मम्मा बोलती है like देख तेरा गुरुजी ने कष्ट काट लिया. तो फिर मुझे याद आता है कि गुरुजी ने जो ड्रीम दिखाया था एंड दिस इज संगत जी दिस इज हाउ ही cuts our karma. ही जस्ट हमारे कष्ट लेते हैं. गुरुजी खुद हाथ पे हमेशा गुरुजी बोलते थे कि तुम्हें तो पे करना है कर्मा तो तुम 90% कर लाइक मैं 90% ले लूंगा और यू हैव टू पे दैट 10%. सो यस तकलीफें आएगी लाइफ में बहुत आएगी बट 90% Guruji will take and 10% will have to, that's just, like our karma that we have to pay for. So that happens. And after that, I was again very emotional. लेकिन वो भी time बीत गया and even मम्मा की life भी save हुई in an amazing way. तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. Next satsang is about tarot cards. So my mom was into numerology
astrology, my mom had also started learning tarot reading. तो एक दिन संगत जी क्या होता है, um, हमारे ना like tarot, because mama started learning, तो mama bought tarot cards. और हमारे वो अपार्टमेंट में भी थे, and then when we moved we also brought them with us, but obviously like कोई यूज नहीं करता था, मम्मा नहीं यूज करती थी, because you know we started believing in Guruji and mama um kind of fell away from that, because it's, you know, Guruji says don't do those things. So we still had them in our home, and जो मेरी second cat थी, Leo, he became very ill, Sangaji. So we, sorry, I'm gonna take a sip of water. The Sangaji, he became very ill, and क्या होता है, we take him to the vet, and we don't know what's going on with him. We don't know what's going on with him, and so we bring him back, and he's still very ill. So after that, I'm so sorry, one second. Let me just go. Sorry, Sangaji, I had to cough a bit. तो लियो हमारा बहुत बीमार चल रहा होता है, and we take him to the vet, और हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है उसके साथ. तो फिर क्या होता है, um, मम्मा को, नहीं, एक ना मूवी आती है, तो मम्मा always wants me to watch a movie with her, and like I said, संगत जी, मुझे, I don't like scary movies. मुझे like I don't like the negativity. तो एक दिन मम्मा बैठी होती है काउच पे, और हम मूवी सर्च कर रहे होते हैं, तो हमें मुझे एक नजर आती है, उस मूवी का नाम टेरो होता है, और मम्मा, मैं like I showed so much interest in that movie, और मम्मा भी हैरान हो गई कि इसको क्या हो गया, you know, she doesn't even watch scary movies. So I'm like, Mama, let's watch this. I was so excited. And हम शुरू भी करते हैं मूवी, और बीच में मम्मा सो जाती है, but I stayed up that whole night. I watched the whole entire thing, and finish भी करती हूँ मूवी, और फिर the next day happened. तो लियो अगेन इज वेरी सिक, बहुत बीमार चल रहा है, और उसकी हमने देखा कि we checked his poop, and his poop had a, not a string, but it was like a really long thing, and it looked like a worm. और मम्मी के like, I remember कि मम्मी के जी Mama basically said कि it looks like a snake. But again, you know, snakes are a lot more longer. It looked more like a worm. Though we're just nervous. We take him back to the vet. They're not giving us any answers. They don't know what's wrong. तो जब उनका उसका एक्सरे होता है, हमें पता लगता है कि उसने कोई स्ट्रिंग खा ली, और वो स्ट्रिंग wrapped up हो गई in around his intestines. So eventually, unfortunately, we had to put our baby down. उसके भी बहुत questions आते हैं मेरी मम्मी को कि, you know, did we do the right thing? और तभी गुरुजी ने मम्मा को आंसर दे दिया था कि don't worry, whatever you did is fine. Um, so after that day, क्या होता है, sorry संगत जी, मैं बस अपने notes देख रही हूँ. um, तो फिर हाँ, तो फिर हम सत्संग जाते हैं. तो माय कैट passed away because we put him down. फिर आता है सत्संग का दिन, और हम सत्संग अटेंड करते हैं, बहुत खुशी से अटेंड करते हैं, और towards the end of the satsang, an auntie gives us, my mom, a saroop, and she gives me a saroop. और हम उनको ना, like we say kindly no कि आंटी हमारे पास बहुत सरूप है, so we don't need any more. So you know, you give it to somebody that needs them. And
शी सेज कि नहीं, ये तो आपकी ब्लेसिंग है तो आपको लेनी पड़ेगी। और मुझे जो स्वरूप मिलता है वो रॉक स्टार का स्वरूप होता है, रॉक स्टार स्वरूप का। और मम्मी को जो मिलता है वो ड्रैगन चोला का स्वरूप होता है। तो वो हो गया, सत्संग अच्छे से हो गया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मी एंड माई मॉम वी आर गोइंग समवेयर एंड आई एम सिटिंग इन द पैसेंजर सीट एंड mama's ड्राइविंग। संगत जी, वी आर अबाउट 2 to 3 inches away। हम ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से एक गाड़ी आती है, it takes a turn, and it was within a minute we would have hit that car, and if we hit that car we would have been very likely injured, and pretty terribly injured actually, or we would have, our life would have been gone। तो हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने हमें सेव करा। तो उसी रात मम्मी को सपना आता है, एंड दिस इज गुरुजीज वे ऑफ शोइंग हर कि मैंने तुम्हारा कैसे कष्ट लिया, और हाउ ही ब्लेस्ड अस। तो मम्मा को एक विजन आता है कि एक गुरुजी का स्वरूप है, and it's been ripped from his forehead to his eye, so there's a huge hole, और उस होल से काला पानी, it's there's a hole and black water starts coming out of Guruji Sarup from the hole। And eventually what happens, फिर जब जब पानी आना शुरू होता है, फिर उसमें से एक ड्रैगन आता है, ड्रैगन होल के अंदर से आता है, एंड इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ स्नेक विद रेड आईज। तो मम्मा, that was basically confirmation कि लियो की भी डेथ हुई। We remembered seeing the warm thing in his poop। तो maybe Leo took that कष्ट upon himself, and गुरुजी ऐसे कष्ट लेते हैं। So thank you गुरुजी कि आपने हमें उसका confirmation भी दे दिया कि you you saved our life and you blessed us with a new life, so thank you so much गुरुजी for that। um Going on to Mahasamadhi सत्संग। तो महासमाधि दिवस होती है, और यहाँ पे एक आंटी आंटी के घर में सत्संग होता है। और उसी सेम दिन हमारी जो एक आंटी है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स, शी लिव्स इन मिसिसिपी, उनके यहाँ भी सत्संग हो रहा है उसी सेम दिन। तो ड्यूरिंग द सत्संग, हम अपने सत्संग जाते हैं आंटी के घर। um, पूरा सत्संग हो जाता है, फिनिश हो जाता है, it was an amazing सत्संग। We are on the way back home, and मम्मा बोलती है कि मेरा मन था कि हम मिसिसिपी होते सत्संग के लिए, लाइक महासमाधि पे। तो मैं भी वो बोलती हूँ कि हाय, लाइक सच्ची, बिकॉज ड्यूरिंग द सत्संग आई वाज आल्सो लाइक, आई वाज लाइक काश हम मिसिसिपी होते इस टाइम। So me and my mom, we had the same thought। Well, we go home, and तब उन आंटी का, जो मिसिसिपी में रहती है, उन आंटी का मैसेज आता है मम्मा को कि तेरे लिए लाइक गुरुजी ने ब्लेसिंग कुछ दिया है। उनको विजन आते हैं, उनको गुरुजी की प्रेजेंस भी नजर आती है। तो she texts my mom saying कि तेरे लिए ब्लेसिंग है, तेरे लिए और टिया के लिए ब्लेसिंग है। तो नेक्स्ट डे जब उनकी बात होती है, वो आंटी बताती है कि ड्यूरिंग हर सत्संग इन मिसिसिपी, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक शब्द मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी गुरुजी, लेकिन पहले उनको मम्मी दिखती है, और मम्मी ने अपनी चोली बाहर करी है और गुरुजी ने मम्मी की चोली में कुछ डाला है। तो that happened, so she saw mama, and then towards the end of the satsang एक शब्द आता है, और वो सत्संग में मैं दिखती हूँ, और इन गुरुजी blesses me। तो it's amazing संगत जी कि how our physical bodies can be at one specific place, but हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा spirit कहाँ घूम रहा है। So we ourselves don't know कि if we're sitting in a satsang, we don't know where our spirit is, it might be in another satsang। तो गुरु, हमारी इच्छा थी कि हम दूसरे सत्संग में होते, बट गुरुजी ने हमें दोनों सत्संग्स अटेंड करवाए। हमारी फिजिकल बॉडी यहाँ पे थी और हमारा स्पिरिट वहाँ पे था। So we got both blessings, and only who can do that? Only Guru Maharaj can do that। And it's it's amazing कि गुरुजी जब भी लाइफ में आए हैं,
I have never left empty-handed. Our blessings only multiplied and we have never looked back. तो ये blessing हुई और एक छोटा सा very sweet satsang happened very recently. Um, there was a satsang at an auntie's house, or it was on a Sunday. So I'm a choreographer and so is my mom. और Sunday को हमारी सारी dance classes होती है. तो मम्मी बोलती है कि तुझे इस टाइम मिस करना पड़ेगा संडे सत्संग क्योंकि क्लास है तो तू मेरी क्लास ले ले मैं चली जाऊंगी क्योंकि शी हैज सेवा एंड स्टफ. तो आई वाज अ बिट सैड क्योंकि आई वांटेड टू गो टू बट हो नहीं पाया. तो आई वाज लाइक ओके नो वरीज यू कैन गो एंड देन मेरे एकदम उसी मॉर्निंग संडे मॉर्निंग को ध्यान आता है कि मम्मा कैन आई नॉट उबर लाइक मैं उबर करके आ जाऊंगी. तो मम्मी बोलती है कि हाँ देख ले अगर क्लास खत्म हो जाती है तो उबर करके आ जा. तो मैं उबर क्लास खत्म हो जाती है आई गो अपस्टेयर्स एंड आई एम मैं सिर्फ लाइक स्वेट पैंट में होती हूँ एंड आई एम वेयरिंग ए शर्ट. तो I'm like really excited and I'm like मैं गुरुजी के लिए कुछ अच्छा सा पहनती हूँ क्योंकि गुरुजी always used to say कि don't wear pants and stuff come in सलवार सूट उनको अच्छा लगता था. So it's like अगर हम मम्मी हमेशा बोलती है अगर हम पार्टियां के लिए रेडी होते हैं हो सकते हैं तो why not for गुरुजी. तो हमेशा I always remember that कि अगर हम गुरुजी के सत्संग में भी जा रहे हैं we should also dress up for our गुरु महाराज. तो मैं ऊपर जाती हूँ बहुत शौक से एंड आई एम लुकिंग थ्रू ऑल माई सूट एंड फॉर सम रीजन मुझे लाल कलर ही अट्रैक्ट हो रहा है. आई जस्ट वांट टू वेयर लाल एंड व्हाइल आई एम ट्राइंग टू फाइंड मैं गा रही हूँ मेरे लाल जियो. तो मुझे एक लाल सूट दिखता है. मैं ट्राई ऑन करती हूँ लेकिन वो मुझे बड़ा ढीला होता है. तो फिर मुझे याद आता है कि मम्मी की क्लोजेट में एक और लाल सूट है सो आई एम गोना गो अहेड एंड ग्रैब दैट एंड आई विल वेयर इट. तो जब मैं वो लाती हूँ अपने कमरे में एंड आई एम ट्राइंग इट ऑन मैं देखती हूँ कि उसका जो पैंट का नाड़ा होता है वो निकला हुआ होता है सो आई कैंट वेयर दैट. तो आई वॉज रियली सैड कि मैंने पैंट और वो पहनी हुई है और जो मुझे सूट पहनने हैं वो अच्छे से फिट नहीं हो रहे. तो मैं क्या करती हूँ एंड आई एम लेट ऑन टाइम तो मे बी द सत्संग्स ऑलरेडी लाइक इट्स गोइंग टू स्टार्ट सून एंड आई वोंट गेट देयर ऑन टाइम एंड आई वांट टू गेट देयर ऑन टाइम. तो I'm on my time limit. तो मैं जल्दी से मैं आई डोंट डू एनीथिंग मैंने जो पहना हुआ है एज इन लाइक मेरी स्वेट पैंट पहनी हुई है मेरी शर्ट पहनी हुई है आई ग्रैब अ शॉल फॉर माई हेड एंड मैं अपनी उबर ऑर्डर करती हूँ एंड आई गेट देयर एंड एज सून एज आई गो इन गुरुजी का चोला पूरा सेम कलर जो मैंने पहना हुआ है. मैंने अपनी टॉप मेरी पिंक थी मेरी स्वेट पैंट्स पिंक थी और पूरा गुरुजी का चोला पिंक था. लाइक कभी कभार होता है कि बैकड्रॉप दूसरा कलर है या गुरुजी का चुन्नी डिफरेंट कलर है बट दिस चोला वाज all pink, very similar to the color that I was wearing that day. And I started crying as soon as I entered. I started crying कि wow, Guruji is so amazing कि Guruji आपकी सिर्फ इच्छा देखते हैं. He doesn't care about anything but just your pure intentions. So whatever आप like करना चाहो, just do it with the pure intentions. And Guruji's again always watching, and उनको उनको सब पता है कि हमारा मन हमारे थॉट्स सब पता है गुरुजी को. तो इट्स अमेजिंग कि गुरुजी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं अपना प्यार दिखाते हैं एंड ही ऑलवेज ऑलवेज लव्स अस नो मैटर व्हाट. इवन देयर आर टाइम्स कि हम कभी कभार हम नालायक होते हैं तो वी फॉल एट टाइम्स एंड यू नो हम अच्छे भी होते हैं कभी कभार बुरे भी बन जाते हैं. सो गुरुजी सीज दैट एंड if we pray, I truly believe कि अगर हम pray करते हैं गुरुजी को, गुरुजी will help us even right our flaws. So these are just a small amount of satsangs, and I would just like to say like thank you to Guruji for, grabbing my hand and taking me on this beautiful journey. Like I said, I have never looked back. Ever since I've been connected to Guruji, मैंने कभी भी पीछे नहीं देखा. मेरी blessings सिर्फ multiply हुई है and my whole perception about life has kind of changed. जब भी कुछ बुरा भी होता है आई से ओके गुरुजी देखेंगे लाइक इट्स फाइन लाइक मैं यस रोना भी आता है बट इट्स लाइक गुरुजी यू नो बेटर राइट लाइक
who knows better than the Lord Himself? So it's like even during the hard times, Guruji has Guruji ने बस shift कर दी mentality कि जब बुरा भी होता है तो कुछ reason के लिए होता है, and eventually हमें वो reasons पता भी लगता है कि जो हुआ क्यों हुआ, और eventually we will connect the dots and we understand कि this is why it happened. तो thank you so much, Guruji, ki you have, made me become so close to you at such a young age, and I am able to, like, मैं बहुत prideful, like, feel करती हूँ कि, like, I have this connection with Guru Maharaj, and I just pray कि, Guruji, please मेरा हाथ नहीं, like, कभी मत छोड़ना. I will never leave your hand. You please never leave my hand. And at the end of the day, हमारी choice होती है. We just have to stay strong and we have to stay humble. We always have to pray and have that connectivity. We always have to make that direct connection to Guruji. कोई लोग सोचते हैं कि अगर गुरुजी बुलाएंगे तो ही होएगा, but sometimes आपकी मन की भी इच्छा होती है. You also have to take the initiative to go and pray and go to satsangs, listen to Shabad, talk to Guruji, make that direct connection. So I want to end this satsang with a Shabad that is very close to my heart, and it is Je sukh de ta tujhe aradhi, dukh vi tujhe te ai, which basically means ki when you bless me with happiness, I worship you greatly. But even in pain, I will reflect on you. And it's such an amazing teaching in life कि जब भी सुख होता है, yes, say thank you to God. Be grateful for all the blessings you have. हमारे पास छत है, रोटी है, वो ही enough है. अगर अच्छी health भी है, that's more than enough. So say thank you to God. And even during the bad times, even during dukh, you have to just believe and have faith कि everything happens for a reason. And अगर कुछ bad चीजें भी आती है जिंदगी में, eventually everything will clear up on its own. So I want to just say thank you, Guruji, Shukrana, Guruji, Pal Pal Shukrana for giving me this opportunity on Multilingual. And thank you all for listening in. And sorry, Guruji, अगर मुझे कुछ भी mistake हो गई हो. Thank you so much.